Now, in the countryside, as we read, what was happening? The women were agitated, furious, angered. Now, in the countryside, what was happening? Country, you can imagine any country, or you can say countryside means the village. Village condition क्या होगी? Like वहाँ पर क्या है? Landlords हैं. Landlords क्या करते हैं? They keep the record of the farmers कि किसके पास कितनी जमीनें हैं, कितना है. They collected the tax from the people. और टैक्स के हिसाब से कई बार क्या होता था, by their own shrewd nature they used to collected more or exorbitant taxes from the people. Sometimes their land, by the, you can say, their own shrewd nature, they, you can say, confiscated the land of the farmers. So such kind of tricks were continued in the villages. So what happened to them? Let's see. In the countryside, rumors spread from village to village. What rumors spread? That the lords of the manors, manors means यहाँ पर manor का मतलब है कि लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास लैंड होती थी. मेंशन मीन्स हवेलियां होती थी, बहुत अच्छे रिच लोग होते थे. इन द मूवी यू कैन इमेजिन इन एनी लाइक जमींदार और राजा वाली प्रथा जो थी. सो लाइक मैनोर, एंड दे हैड हायर्ड बैंड्स एंड ब्रिगेड्स. हायर्ड बैंड एंड ब्रिगेड्स मतलब उनके पास काफी कुछ था और उन्होंने रॉबर्स इकट्ठे किए. रॉबर्स का मतलब सब मसल्स मैन. ठीक है, वो क्या करेंगे? वो टैक्स कलेक्ट करते थे. हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप्स, मतलब जिन जिनके पास, किसानों के पास टैक्स देने को नहीं है या उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रक्शन करना. मीन्स लाइक दिस इज अ सिचुएशन व्हेन एनीथिंग कैन बी हैपन. जब क्योस होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता. डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस. तो इन्होंने क्या किया? मीन्स दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द विलेजेस, द क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, राइप क्रॉप्स मतलब अच्छी खड़ी फसल को बर्बाद करवाया. और अपने जो मतलब रॉन्ग एलिमेंट्स थे, दे स्टार्ट सेंडिंग इन द विलेज एंड लोगों से जबरन टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की. सो जिन लोगों के पास था उन्होंने दिया, नहीं दिया, सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया. Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized horse, pick forth and attacked the Chetics. मीन्स अब होता क्या है, जब इतना सब chaotic एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा? कॉट इन फ्रेंजी ऑफ फेयर मीन्स लोग क्या थे? अब पगला गए बिल्कुल. ठीक है, पागलपन जैसा छा गया उनके ऊपर. द पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज द होर्स एंड पिक फोर्स. मीन उन्होंने अपने छोटे मोटे हथियार उठाने शुरू किए और क्या किया? अटैक द चेटेक्स. चेटेक्स इज द कैसल, मीन्स उनके जो महल थे या उनके जो मेंशन थे, किनके? किंग्स के और नोबल पर्सन के. तो उन पर जाके अटैक करना शुरू किया. द फर्स्ट पेज यू कैन रिमेंबर इंट्रोडक्शन व्हाट वी रेड. And they looted hoarded grain and burned down the documents containing the records of manorial dues. क्या करेंगे इंसान? बिकॉज ये पेजेंट है, अब अपने को प्रोटेक्ट करेंगे. सबसे पहले तो इन्होंने वो बही खाते जला दिए जिसमें सारे रिकॉर्ड लिखे हुए थे. एंड दे लूटेड द ग्रेन, और जो होर्ड किया हुआ था ग्रेन, मतलब जो स्टॉक कर रखा था, जो सब चीजें एक जमींदार के पास होती है, उनको लूटना शुरू किया. A large number of nobles fled from their homes and many of them migrating to neighboring countries. Large number of nobles fled. यहाँ तक क्या हुआ? Because of this, you can say terrorism like activities. तो क्या हुआ? Nobles start fled, मतलब वो लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग गए. And migrating to the neighboring countries. जितने भी रिच थे, because their life is very much precious for everyone, so they start fleeing away from the country. Now, that last paragraph, faced with the power of the revolting subject. Who is facing now? Monarch. Louis 16. Face the power of the revolting subject means the people. प्रजा जो है उसको देखकर क्या हुआ? Louis 16 finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle of this powers would form now on the checked by the Constitution. हाँ, अब उसको क्या लगा? अलग थलग पड़ा तो उसने क्या किया? जो इस नेशनल असेंबली में डिस्कस हुआ, ठीक है, वो उसने सब मान लिया. मीन्स ही वाज एग्रीड विद द पॉइंट्स व्हाटएवर डिसाइडेड इन नेशनल असेंबली. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree, means an order was given abolishing. एक decree मतलब एक legal assignment, एक legal document, एक legal law निकल के आया क्या था? Abolishing the feudal system of obligations and taxes. Abolishing means एक कानून ऐसा बनाया गया जिससे feudal system, इन सामंतवाद खत्म कर दिया गया.
Obligation and taxes, whatever the taxes imposed by the church and others, they were all finished. Members of the clergy too were forced to give up their power. Member of the clergy, the church, means they were also forced to give up their privileges, means उनके अधिकार भी ले लिए गए. चर्च को भी ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए. Like Tethys was abolished and lands owned by the church were confiscated. जो चर्च के पास लैंड होती थी वो भी ले ली गई वापस, और जो चर्च को टैक्स दिया जाता था वो भी एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला? अभी गवर्नमेंट के पास कितनी एक्सेप्ट हो गई थी? उसके पास अच्छी खासी इनकम हो गई थी, कम से कम 2 बिलियन लिवरेज की इनकम उसको इससे मिली. सो वी हैव सीन, we can conclude this by you can say saying like what happened in the outbreak of the revolution. Like first if we see, firstly मीटिंग हेल्ड हुई. तो उस मीटिंग में क्या था? 3 estates were assembled. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. तीनों एस्टेट्स ने क्या किया मीटिंग में? थर्ड ने अपोज किया, क्या? 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो दे क्विट द असेंबली एंड दे असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट. इन टेनिस कोर्ट नेशनल असेंबली दे फॉर्म. दे डिक्लेयर्ड देम द स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री. और उसी में दो पर्सनैलिटी निकल कर आए, मीराब्यू एंड एबिसिस. Mirabeau was noble person, Abysses was a priest. So both played a very important role, and they made understand the crowd that the role of the citizen in the country. Now another picture give us a glimpse of village. Means what was happening in a village? People attacked on manure. Manorial dues were burnt, and people, you can say, assembled together, and they, you can say, took away the hoardings from the chetics. Another is that lastly, what happened? King surrendered himself to the spokesman or National Assembly. Means all the privileges and rights were taken away, all the taxes were finished. So this was the gist of that particular outbreak of the revolution. Hope you understood. Revise. And after this, one of the map is there, though it is very you can say shabby or not visible properly. So with the help of internet, like you can get a clear map and take a screenshot, and you will draw this map in the copy. So today's homework, if you see, I have given 2 homeworks to you. First is dates you have to write, another this map. So draw this map and write the date firstly, and afterwards when chapter will be on the pace of finishing, we'll do the question answer. Till the time these two you will do. Okay, thank you.